How can you be successful in 2025 RBI examination? In order to understand this, in order to get this trick, you need to watch the entire video. मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, 4 मेजर स्टेप्स बताऊंगा, एंड इफ यू कैन फॉलो दीज 4 स्टेप्स then you can beat the competition that is out there and find your way towards success. At the end of the video, I also want to talk about a real example. उस real example से आपको पता लगेगा exactly कि clutter क्या है और एग्जाम के लिए रेलेवेंट क्या है. जब आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीडिंग इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये 4 मेजर चीजें बताने वाला हूं, एंड दीज 4 मेजर थिंग्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग इट और ब्रेकिंग इट फॉर यू इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल. Number 1 is complete preparation. Nothing can beat preparation because ultimately you have to write the exam, and in order to do that you have to prepare. आप पैसे देके नहीं घुस सकते आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऐसे ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट वेरी वेल राउंड अबाउट इंस्टीट्यूशन. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल, यू हैव टू बी मेरिटोरियस. इन ऑर्डर टू डू दैट आपको प्रिपरेशन खाली करनी नहीं है, कंप्लीट करनी है, रिविजन कंप्लीट करना है, टेस्ट कंप्लीट करने हैं. मैं सारी चीजें एक एक करके समझा देता हूं इन अ वेरी ब्रीफ मैनर. सो व्हेन आई से कंप्लीट प्रिपरेशन, व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट आई मीन? नंबर 1, फेज 1 के कॉन्सेप्ट्स और फेज 1 के क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस. नंबर 2, फेज 2 का सिलेबस और फेज 2 का करंट अफेयर्स भी. तो फेज 1 के कॉन्सेप्ट्स, फेज 1 की प्रैक्टिस, फेज 2 का सिलेबस, टेस्ट्स के थ्रू प्रैक्टिस. बिकॉज प्रैक्टिस खाली क्वेश्चंस उठा के नहीं करनी है, आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में भी घुसना जरूरी है बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन. अगर एग्जाम एनवायरनमेंट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट इनफ नंबर ऑफ टाइम्स, दैट यू हैव नॉट गॉट कंफर्टेबल इनफ फॉर द फाइनल एग्जाम. जब फाइनल एग्जाम में बैठे हो, you need to be focused, you need to be confident, you need to have that self belief that I will do it today because I've already done it 100 times before. So practice of tests. Number 5, answer writing, because this is not just an objective examination. यहाँ पर objective और descriptive का mix किया है. So you need to be able to write at least 1 time every week and put yourself again in the exam environment. 4 question उठाए, 4 answers लिखे 1.5 घंटे में, then checking, evaluating your own answers. If you do it enough number of times, automatically आपके लिए वो इतना easy हो जाएगा, then in the final examination you will not feel out of place. In the final examination you will not feel anxious. आपको बहुत नॉर्मल लगेगा because you have already done it n number of times. And finally current affairs. ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है. करंट अफेयर्स में क्या करना है ये और बता देता हूँ. स्पॉटलाइट, RBI 247, PIB 247 एंड टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स, ये 4 चीजें आती हैं which combine together and form करंट अफेयर्स. इसमें से एक भी छोड़ दोगे, योर करंट अफेयर्स इज नॉट डन. सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू डू. और इसको करने के लिए आपको 6 महीने चाहिए ही चाहिए. इतना सारा सिलेबस आपको कवर करना है, इतना सारा करंट अफेयर्स करना है. आप एक्सपेक्ट करो कि 6 महीने से कम में हो जाएगा? नो, यू लिविंग इन अ ड्रीम लैंड. एंड इफ एनीवन इज टेलिंग यू मैं 2 महीने में करा दूंगा, दे फूलिंग यू. इट नीड्स 6 months. इन 2 months यू विल बी एबल टू डू इट विद सर्टन काइंड ऑफ लक कि मेरा 50% लक है, 50% एग्जाम प्रेप है, तब मेरा शायद क्लियर हो जाएगा. बट राइट नाउ यू डोंट नीड दैट. यू नीड टू बी सर्टेन दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन, यू विल फाइंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर कंप्लीटली. तो ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है. कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं करोगे, कितनी भी बातें करते रहो, कितना भी सोचते रहो एग्जाम के बारे में, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन. व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू क्लियर द एग्जामिनेशन इज दिस. ये आपको करना ही करना है. Start praying that notification comes after July, because if it comes before July, then you do not have enough time and you will not be able to complete your preparation. फिर आपकी preparation आधी अधूरी है, and that is itself a side effect for you. That is itself going against you because there are thousands of students already preparing. आपका कंपटीशन उन लोगों से नहीं है जो टेलीग्राम पे बैठे हैं या फिर जो और सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के पूछ रहे हैं व्हेन विल द नोटिफिकेशन कम. आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर द नोटिफिकेशन कम्स. इफ द एग्जाम डज नॉट हैपन, हाउ, व्हाई डू आई नीड टू प्रिपेयर? आई डोंट नो इफ द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हैपन और नॉट. देयर इज ऑल दिस टॉक गोइंग ऑन, बट दे आर नॉट योर कॉम्पिटिशन. योर कॉम्पिटिशन इज अ पर्सन who's sitting silently in his room studying for the past 4 months already. He's 4 months ahead of you. तो अगर आपको अगले 6 महीने में if you want to beat that person, then you have to prepare all of this completely. You cannot leave it half and then hope कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा.
होप से नहीं होगा सिलेक्शन, कंप्लीट प्रिपरेशन से होगा. लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज all the more important, because this complete preparation cannot be done if this mental control does not exist. तो आपकी complete preparation तभी हो सकती है when you are mentally in control of yourself, of your brain, of your mind. In order to have that mental control, what can you do? Let's talk about that. The difference lies between thinking and overthinking. बहुत सारे लोग हैं जो सोच के they are able to think and they are able to plan and then they are able to execute that thinking. And then there are a lot of people who overthink, जो खाली सोचते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं. And in that overthinking, they tend to damage whatever preparation they have already done or whatever they're planning to do. So overthinking breaks apart everything that you're either doing or planning of doing. बात करते हैं, let's talk about thinking and overthinking. कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको. सिलेबस कितना पेंडिंग है? इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, देन यू आर थिंकिंग. करंट कितना पेंडिंग है? इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड देन सॉल्विंग इट, देन यू आर थिंकिंग. रिविजन हुआ या नहीं हुआ? इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड देन एक्चुअली सिटिंग डाउन एंड रिवाइजिंग, देन यू आर थिंकिंग. टेस्ट लिखे या नहीं लिखे? इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड एक्चुअली राइटिंग टेस्ट, if you've not done it already, then you're thinking. But you might be overthinking if you're asking these questions to yourself. Exam कब होगा? I've already answered it once. उतना काफ़ी है. एक बार आपने समझ लिया, 6 महीने के लिए बात टल गई, 6 महीने के लिए तैयारी करो, उसके बाद सोचेंगे. रिजल्ट कब आएगा? Lot of students were worried about 2024 exam result, even though they have not written that exam. वो उसके बारे में सोच रहे हैं, ना कि अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी होल्ड पे करके बैठे हैं, बिकॉज दे लाइक जब व्हेन द रिजल्ट ऑफ 2024 कम्स, देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. इवन देन दे आर डूइंग इट. व्हाई? बिकॉज दे आर ओवर थिंकिंग. इट्स नॉट देयर मिस्टेक, इट्स नॉट देयर प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव एंटर्ड द साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग. मेरा होगा या नहीं होगा? जब तक एग्जाम दोगे नहीं, तब तक आपको भी नहीं पता, एंड नोबडी नोज टिल देन वेदर यू विल गेट थ्रू और नॉट. और जब एग्जाम दोगे उससे पहले अगर तैयारी नहीं करी होगी तो नहीं ही होगा. यू विल नेवर गेट थ्रू अनलेस यू आर प्रिपेयर्ड वेल. देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड ओनली, कैन बी आंसर्ड ओनली बाय वेदर यू आर प्रिपेयरिंग और नॉट प्रिपेयरिंग, नॉट बाय एनीथिंग एल्स. तो क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता है. हो गया तो मजा आ जाएगा. डे ड्रीमिंग. अ लॉट ऑफ अस अटैच ओवर थिंकिंग विद डे ड्रीमिंग. 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 में से 5 घंटे डे ड्रीमिंग कर रहे हैं. हो गया तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा. Lot of us are not talking about it, but we know within ourselves that we are actually doing it. हम लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसमें से एक चीज तो हम कर रहे हैं. So these are the two, number one, these two things can help you prepare and can help you find success in the examination. Number one, if you are completely prepared or in the process of completing your preparation. And number two, you have understood the difference between thinking and overthinking, and you're constantly striving to move from overthinking to thinking, because you know the difference seems minute, but the difference in terms of your success is big, is massive. Let's come to the next one. Point number 3 and point number 4. ये 4 points ही हैं जिससे आपकी सारी preparation सब कुछ sort हो जाएगा and you can find success. Number 3, books versus podcast. इसी से connected मैं आपको एक story बताने वाला हूँ अभी बहुत जल्दी, and that story, that real example is going to help you understand where exactly do you lie. Do you also lie in the same group or not? So stick around. Let me talk about the third point, books versus podcast. बहुत सारे students हैं, believe me, n number of students right now who think, and I'm seeing it first hand on YouTube, n number of students right now thinking कि मैं podcast के through पढ़ाई कर लूँगा. मैंने एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे का podcast देख लिया, that is enough, that is helping me a lot. They actually making themselves believe that it is helping them prepare for the examination just because they know more about Reserve Bank of India or about any other institution or about anything at all related to banking system. Believe me, it is not helping you in any way possible. Books will help you answer real questions in the examination. RBI 247 will help you answer real questions in the examination. Revision is going to help you memorize for the examination, help you improve your memory for the examination. Tests will help you practice even better for the examination so that when you get into the exam hall, you don't feel anxious. आपका confidence, आपका self belief आपके साथ exam hall में जाए. Podcast कोई value नहीं है.
There is zero value that podcast is adding or is ever going to add to your preparation. अवेयरनेस के लिए सही है, देख लो, बट आपको अवेयरनेस नहीं चाहिए अभी, आपको एग्जाम क्रैक करना है, उसके लिए नॉलेज चाहिए. देयर इज अ मैसिव डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अवेयरनेस. राइट नाउ यू डोंट नीड अवेयरनेस, राइट नाउ यू नीड नॉलेज. इसीलिए पॉडकास्ट आर एडिंग जीरो वैल्यू टू योर प्रिपरेशन. इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड. स्टॉप वॉचिंग देम. यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर किलिंग इट, यू आर लिटरली किलिंग इट. मोटिवेशन सिमिलर टू पॉडकास्ट. हम लोग पॉडकास्ट देख क्यों रहे हैं? अवेयरनेस तो हम अपने आप को समझाने के लिए देख रहे हैं, दैट्स एन एक्सक्यूज, बट अल्टीमेटली वी आर वॉचिंग इट बिकॉज वी वांट मोटिवेशन. हमें पंप चाहिए, डोपामीन इफेक्ट चाहिए कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ. उसके लिए 1 घंटा बर्बाद कर दिया हमने डेली बेसिस पे, या हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन. एनी इवन स्पेंडिंग अ मिनट और समथिंग लाइक दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट इज टेकिंग यू 1 minute अवे फ्रॉम योर सक्सेस, फ्रॉम योर गोल. देन वाई डू यू डू इट? इस तरह से मत देखो कि मैं आगे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ. इस तरह से देखो, अगर गोल सामने है मेरे तो मैं उस गोल से पीछे आ रहा हूं. आई एम नो मोर क्लोजर टू द गोल, सो आई हैव टू वर्क इवन हार्डर टू गेट टू द गोल. बट अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं और 1 घंटे पॉडकास्ट दे रहा हूं तो मैं और पीछे आता जा रहा हूं. आई एम एक्चुअली नॉट गोइंग अहेड, आई एम कमिंग बिहाइंड फ्रॉम माई गोल, फ्रॉम माई सक्सेस पॉइंट. मोटिवेशन similarly adds zero value to your preparation. Motivation is an outcome. Motivation is not the starting point. Discipline and work is the starting point. Motivation is an outcome that comes when you complete your studies, when you complete your goal, when you complete your daily targets, when you complete your discipline, when you completely follow your discipline on a daily basis. That is when motivation kicks in. But हम लोग flip कर चुके हैं उसको. Motivation adds zero value. It's a fraud and it's a pure sign of weakness, mental weakness. तो अगर कोई बहुत हट्टा कट्टा बंदा है, बैठा है और सोच रहा है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तब मैं ये पढ़ाई करूंगा, तैयारी करूंगा, आई एम सॉरी, यू आर मेंटली वीक इफ यू आर लुकिंग फॉर मोटिवेशन टू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग एट ऑल. बिकॉज मोटिवेशन विल ऑटोमेटिकली कम व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट. और कभी स्टार्ट नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं आएगा. वो जो आएगा वो फ्रॉड ही होगा. इट इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू in any way possible. It is merely an excuse. So these are the differences between books and podcasts. Ultimately, the books are going to get you through the examination. Stop wasting your time with podcasts. And I'm soon, very soon, in this video only, going to talk about a real example, a real discussion that I had recently with one of my students who asked me something about podcasts versus books. And this is what I told him. I'll tell you very soon. Let's come to the last point first. Thinking different. Because this examination is relative, it's not absolute. ऐसा नहीं है कि आपके 50% नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया. It is relative, which means अगर आपके 50 लोगों से 100 लोगों से ज्यादा अच्छे आए या टॉप 50 टॉप 100 में नंबर आए तभी आपका सिलेक्शन होगा. So your selection depends upon how are you performing relative to other people out there who are also performing in the examination. So how do you maintain a difference between you and the other people out there? By thinking differently. जैसे जैसे आप इसमें चीजें बढ़ाते जाओगे आपका पारा ऊपर जाता जाएगा. Complete preparation, you've already moved up. Thinking, not overthinking, you've already moved up. Books and not podcasts, you've already moved up. And the last thing is thinking different. Now, what exactly do I mean when I say thinking different? Number one, everyone is busy with podcasts. It is good for me. Let me study. इंस्टेड ऑफ टेलिंग योरसेल्फ यार ये पॉडकास्ट आया देख लेता हूँ 15 मिनट, उल्टा सोच सकते हो. ये भी तो सोच सकते हो मेरे जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हजारों लाखों स्टूडेंट्स होंगे जो यही बोल रहे होंगे अपने आप को, नया पॉडकास्ट आया देख लेते हैं थोड़ा टाइम, कोई बात नहीं, बहुत मेहनत कर ली है, रेस्ट भी बनता है. लेट मी टॉक टू माई सेल्फ इन अनदर वे एंड से टू माई सेल्फ, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, मैं इन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंस और बढ़ा लेता हूँ. Let me prepare. Let me study even harder. Let me use these 15 minutes to study something useful. मैं रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी ऑन RBI वेबसाइट. अगर अभी तक आपने नहीं देखी है देखिएगा. उससे आपको पता लगेगा कि RBI वेबसाइट से एक्चुअली आप RBI एग्जाम के कितना करीब जा सकते हो टू क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बाय यूजिंग द वेबसाइट वेल. Let's come to the second point. How do you think different? Everyone is talking about the notification. Let me study. हर कोई टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी चले जाओ, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द नोटिफिकेशन. कब आएगा? एज इफ
जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तो आपका क्लियर हो ही जाएगा. I know that it is not the case. That is the reality for me. Even I am not completely prepared as of today. So let me get down and study and not be a part of the crowd. Because हर कोई तो वो कर रहा है, उनको समझाने से कोई फायदा नहीं है. Let me study. That is the second way you can be different. Everyone is overthinking. Let me think. I've told you the difference between thinking and overthinking, and you would know instantly when you're overthinking or your friends are overthinking. आपको ज़्यादा सबको सही करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है. लेट मी डू दैट. इफ समबडी इज ओवर थिंकिंग ऑन टेलीग्राम, आप किसी ग्रुप में हो, लॉट ऑफ पीपल आर ओवर थिंकिंग, टॉकिंग अबाउट random things that you know it's not going to help them prepare for the examination or clear the examination, you better get down and study and use that time. Let them do whatever they want to do with their lives. But you know that all these people, instead of being a part of their conversation and wasting your time, you can also think in a different manner. आप अलग तरीके से सोच सकते हो और अपने आप को बता सकते हो कि यार सब लोग तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं जिससे एक्चुअली एग्जाम क्लियर नहीं होगा. मैं थोड़ा धैर्य बना के रखता हूँ. लेट मी स्टार्ट स्टडिंग. लेट मी stay in the thinking zone and not get into overthinking zone. The last, everybody is watching, let me read. Now this is most important because हर कोई आजकल, we are so hooked to OTT platforms, we are so hooked to Instagram, to YouTube, to various other platforms जहाँ पे हम लोग सब कुछ देख रहे हैं. बट देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा. देखने से ही एग्जाम क्लियर हो जाता तो बहुत सारे लोग बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेते, इंक्लूडिंग RBI, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होता. एक्चुअल नॉलेज चाहिए होती है, एंड दैट कैन ओनली कम व्हेन यू रीड इनफ. तो इसीलिए इफ you are watching or someone else is watching, a lot of people are watching stuff, instead of telling yourself यार ये उसने देखा मैं भी देख लेता हूँ, instead of doing that, start telling yourself otherwise. उसने स्क्विड गेम देख के अपनी पूरी रात खराब कर ली, instead of having FOMO about it कि यार मैं भी देखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब लोग देख रहे हैं, let me just get back to studies and read. हर कोई देख रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम करूंगा, आई विल हैव सब सेंस ऑफ पर्पस एंड एम्बिशन इन लाइफ. उसके बाद देख लूंगा अगर मुझे उसके बाद रेस्ट करना हुआ तो. नाउ इज नॉट द टाइम टू रेस्ट. लेट मी नाउ कम टू द रियल एग्जाम्पल, टू द स्टोरी दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट विद ऑल ऑफ यू. और इस स्टोरी से पता लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जैसे, यू माइट ऑल्सो बी इन वन ऑफ देम, एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. स्टूडेंट ने मेरे को बोला, सर RBI said they will soon release podcast. When will they come? The first question that he asked me. And I asked him, मैंने उसी ब्रेथ में उससे दोबारा क्वेश्चन पूछा, is podcast is equal to more marks or is reading, revising, testing is equal to more marks? आप ही बता दो मुझे. मैंने उससे पूछ लिया कि पॉडकास्ट देखोगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, या फिर पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, टेस्ट लोगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, किसके चांसेस ज़्यादा हैं? तो उसने बोला, सर पॉडकास्ट देखूंगा तो कुछ तो समझ आ ही जाएगा. नो डाउट कुछ तो समझ आ ही जाएगा, बट व्हाट इज दैट? दैट इज अवेयरनेस. अगेन, दैट इज नॉट नॉलेज. वो अवेयरनेस है, नॉलेज नहीं है. एंड रीडिंग, रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग, दीज थ्री आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड गिव यू नॉलेज. पॉडकास्ट देखोगे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, बस अवेयरनेस बढ़ेगी. उस अवेयरनेस से नंबर का कोई रिलेशनशिप नहीं है. Therefore, whenever you feel like you are getting attracted towards any kind of clutter in life, then ask yourself, and then ask me this question again if you want to. पहले अपने आप से पूछो और फिर मुझसे पूछ लेना अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं पॉडकास्ट देख के ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, या फिर मैं ओवर थिंक करके ज़्यादा मार्क्स ले आऊँगा, या फिर if I think exactly like the crowd or study less, do not complete my preparation, I can still clear the examination. If those are the answers that come to your mind, then you can reach out to me and ask me the same question again. So that is all from my side for this video, where I wanted to talk directly to the students who are preparing for 2025 exam. या तो वो डाउट में हैं, या फिर उनको लग रहा है कि they are preparing but they're actually not preparing, या फिर they're still waiting for notification to come or something to happen that will make sure that they start preparing for the examination. If you are one of those students, then this video can help you. Watch it again if you have to, spend time on it, write it down, and then start working on it, get back to work.
That's all from my side. I'll see you again. All the best. Keep studying hard. Jai Hind.